Okay, so let us start today's class. Once again, I welcome you all to the virtual class. Okay, pleasant morning to my all dear students, and I hope you will follow the instruction given by me. Yes, all of you are good children. Ishika, okay, Ishika, now tell me one thing. What you are using? You are using mobile phone or you are using laptop computer? Yes, unmute yourself, Ishika. Ishika, you need to unmute yourself. Then I can. My voice is not clear. Oh my God. It is so. Ishika, I think you should change your place if you are using mobile phone. Okay. Ishika, there is one section in your portal that is homework. Okay. Let me show you again. When you log in with your ID, okay, and when you select English subject, so it comes, okay. Let me show you once again. Ishika, just be careful now. So after login, you click on English subject, then it appears, this is for कंप्यूटर लैपटॉप यूजर्स मोबाइल यूजर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट these are the sections which are same, totally same. Clear? Here you get homework section, that is section 2. So inside the homework you will get two homeworks which are based on multiple choice questions. Okay? So in one month you will get 3 homeworks of MCQ and 1 homework of writing, that is means subjective based homework. Clear? So for MCQ based homework, what you need to do, you need to log in and click on the English subject, then you will come you will have to come to homework section. Here you get homework 1 and homework 2. So as you click on homework 1, a Google form will open. I think you can see the page. Here you have to enter name, then you have to enter your admission number. Okay, as you scroll it down, you can see questions. There are 10 questions. You have to attempt all the questions. Then finally you have to click on submit button. So in this way, you have to attempt homework 1 as well as homework 2 if you don't have submitted homework 1. Clear? Okay, I think it is clear now. Ishika, if it is clear, then tell me yes sir, it is clear. Harit, I don't know what the problem is. You try once again. Okay, if it is not done, then tell me. Pari, I have done, but not confirmed that it is submitted. I will tell tomorrow that how many students have submitted their homework. Okay. Okay, I will show you the list. Well, so let us continue with the poem that is Rain on the Roof. Very nice poem, and we will, I think today we will be able to finish it up. Yes. So first of all, let me ask, who is the poet of this poetry? Yes, anyone is there who is willing to say the name of the poet of this poem? Rain on the Roof. Yes, Khushil is there. Yes, Khushil, tell me.
Sir, cook skinny. Quote skinny. Yes, quote skinny. Good, very good, Kushil. चलो आप लोग याद रख रहे हो, that is very nice. Well, so let me continue. Yes, this is it. So, Rain on the Roof. This poem is a reflection of the poet's feelings. ठीक है, पोएट जो पोएट है वो अपना इमोशन, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस किए हैं इस पोम के थ्रू. ठीक है, सो ही स्टार्टेड with humid shadows, that means the cloud. Okay, rain on the roof, so that means obviously there will be a big role of cloud. So dark cloud hover over all the starry spheres. Hover means cover kar lena, है ना? और when you know the cloud, generally it moves one place to another place, so that is called hover. ठीक है, और स्टारी स्फीयर्स मतलब ये रात का टाइम है, क्योंकि स्टार जो होता है वो रात को ही दिखता है. एंड द मेलांकोली डार्कनेस, जो डार्कनेस है वो ऑब्वियसली सैड, डिसअपॉइंटेड चीजों को ही वो रिफ्लेक्ट्स करता है ना? इट रिफ्लेक्ट्स द सैड पार्ट ऑफ लाइफ, डार्कनेस. एंड व्हेन वी से शाइन, दैट मीन्स हैप्पीएस्ट, happiness. Okay, okay, so stanza 1 we have done with it. Stanza 2, let me recapitulate it once again. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. So here busy being means human being. Okay, and who is the person referred here? Obviously, the poet. Okay, when the poet, you know, listens the patter sound of the rain, tap tip tap tip tap tip tap tip tap tip, जो पैटर साउंड है वो सुनते हैं, तो उनके हार्ट में, उनके माइंड में ड्रीमी फैंसीज आने लगते हैं, है ना? मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग बहुत किसी चीज को लेकर सोचते हैं तो उस दुनिया में खो जाते हैं, कोई दूसरी दुनिया में खो जाते हैं. सो हियर द थिंग इज सेम, द पोएट इज लॉस्ट इन अनदर वर्ल्ड, एंड दैट वर्ल्ड इज टोटली ड्रीमी फैंसीज. द वर्ल्ड इज ऑफ ड्रीमिंग फैंसीज. सपनों के देश में, ख्यालों के देश में वो खो गए. ठीक है, and 1,000 recollections means memory, past memory obviously, weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So you know, जो क्लोथ होते हैं वो थ्रेड से बनता है, धागे से, और धागा जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली आपस में जोड़कर क्लोथ तैयार करता है ना. सो हियर यू कैन सी द क्लोथ. ठीक है, ये तो नेट जैसा दिख रहा है. ओके, सो नेट भी जो है धागों से बुनकर बनाया जाता है. तो यहाँ पर एयर थ्रेड्स मीन्स व्हाट? द इमेजिनेशन. हवा का धागा मतलब इमेजिनेशन. तो पोएट का जो इमेजिनेशन है वो क्लोथ तो तैयार नहीं कर रहा है, वो इंसिडेंट, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उनके लिए एक अलग वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है. ठीक है. Okay, so this much is clear, I hope. Let us move to the stanza 3, and let me give the chance to read the stanza. To whom I should give? Yes, anyone is there who wants to read the stanza by your own? Well, I can see Pari has raised hand. Let me unmute you. Just a minute. Yes, yes, Pari. Read the stanza. Now in memories comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn
Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Okay, good, Pari. Okay, so now let us have the explanation. The pronunciation of this word is Okay, er means it is not air. And okay, let me explain what does it say. So in the first quatrain means combination of 4 lines. Now in memory comes my mother. So अब जो बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन में, है ना, जनरली वी सेपरेट माइंड एंड ब्रेन. माइंड अलग सोचते हैं, ब्रेन अलग सोचते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो कंबाइनली काम करता है. तो उनके दिल में इस कौन आते हैं? उनकी मम्मी. एज शी यूज्ड इन years agone. Agone मतलब पास्ट. ठीक है. अब यू हैव आइडिया ऑफ अगो. हम लोग जब पुरानी बात करते हैं ना, 10 years ago, 10 साल पहले की बात है. तो एज शी यूज्ड इन years agone, दैट मीन्स what? Right now the mother is not present. That means she is no more. So you can see the poet is not happy in the poem. Okay. He is missing his mom. So next he says to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Dawn means daybreak. Okay, that is sunset. ठीक है, जब दिन खत्म हो जाता है, जब शाम हो जाता है 6 बजे के बाद, दैट इज कॉल्ड dawn. ठीक है. ओके, सो हियर द पोएट इज सेइंग जब मेरी मम्मी मेरे साथ थी, अभी मेरे पास नहीं है मेरी मम्मी, तो ऑब्वियसली मॉम इज द यूनिक character of the world and no one can supplement the place of mom obviously. मतलब जब आप घर लौटते हो कहीं से, स्कूल से या कहीं बाहर से, सबसे पहले आप इसको देखना पसंद करते हो. ऑब्वियसली द फिगर इज मॉम. घर में पापा है, भैया है, बहन है, नो मैटर्स, मॉम होना चाहिए, है ना. सो वी आर so closed with our mom. So here the poet says to regard the darling dreamers. So उनकी मम्मी जो है ना, वो उनको एक मतलब जनरली हमारी दादा दादी हमको कहानी सुनाया करते हैं. ठीक है, और ऐसे कहानी सुनाया करते हैं जो सपने में भी आने लगता है. So here the thing is like that. His mom used to spend lot of time, उनके साथ बहुत टाइम बिताते थे, सोते तक. मतलब जब तक मैं सो नहीं जाता था, मेरी मम्मी मेरे पास हुआ करती थी और वो मुझे बहुत कुछ शेयर किया करती थी, बहुत कहानियाँ सुनाया करती थी. Ere she left, ere means it is the meaning is old poetic word for before. बहुत पहले की बात है. ठीक है. She left them till the dawn. So that means the poet was so close with his mom. दिन ढलने तक वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ हुआ करता था. मम्मी का अफेक्शन, मम्मी का लव he used to enjoy. But now he is all alone. Okay, his mom is not with him. Then what he says in the second quatrain, set of 4 lines. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of rain. So here list means listen. ठीक है, सुनना. ये लिस्ट मतलब वो सामान का लिस्ट नहीं है. ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन. पहले पोएट लोग जो है वर्ड के साथ इस तरह के
चेंजेस करते थे, है ना, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक अप्रोच. सो ओनली पोएट्स आर लाइसेंस्ड टू डू दिस. ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते ना. ठीक है, जस्ट लाइक अगॉन. Okay. List. So as I list this refrain means what? A repeated part of a song or a poem. Hear the sound of the rain. Refrain means when something is repeated again and again, again and again. So इस poem में repeat क्या हो रहा है? Obviously, the patter sound of rain. ठीक है. तो see, बारिश की बूंदों की जो आवाज है, उसको सुन के पोएट को क्या याद आ जाता है? उनकी मम्मी की वो प्यारा सा लुक, प्यारा सा चेहरा, है ना, और शुड आई से प्यारी सी चेहरा उनको याद आ जाता है when he listens the refrain means the patter sound of rain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So here if I ask you ki how do you recognize the sound of rain, you would say with a noise hai. ठीक है, झर 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 झिप झिप टिप टप, the noisy. But in the eye of a writer, in the mind of a writer or a poet, the noise is actually song. Clear? So the song is played upon the shingles. Shingles means obviously the roof made by wooden block. ठीक है, और जनरली हमारा जो छत है कंक्रीट का बना हुआ है, उसमें तो रेन का आवाज़ पता ही नहीं चलता. अगर वो प्लास्टिक का, टीने का या लकड़ी का होता तो हमें भी सुनाई देता रेन का साउंड. ठीक है. सो इन दिस वे द पोएट ends the poem, and I hope you have got the concept of the poem. Okay, you have got the word meaning also, and I hope you have started to write down the notes. Let us know about the rhyme scheme. Okay, so what is rhyme scheme? Generally, you know what, previously, you know, we used to recite the poem or we used to sing the poem. So poem is something which is sung, गाया जाता है. ठीक है, कविताओं को गाया जाता है या उसको रिसाइट किया जाता है. You must have participated in poem recitation competition. So गाने में क्या होना चाहिए? लय होना चाहिए और सेम साउंड वर्ड मैच होना चाहिए, तो वो गाना सुनने में अच्छा लगता है ना. जैसे मेरी देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरी देश की धरती. तो धरती, मोती, धरती, सो यू नो ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं. सो राइम स्कीम समझना बहुत इजी है. You have to look at the last word of the each line. So here it is hover, and always rhyme scheme starts with A. अब hover के साथ कोई दूसरा वर्ड मैच हो नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर A इकलौता है. नेक्स्ट कम्स spheres. सो hover के साथ spheres का कोई मैच नहीं है, राइमिंग तो हो ही नहीं रहा है, साउंड का कोई मैच हो नहीं रहा है, तो इट इज B. Then comes darkness. अब hover, spheres, darkness मैच हो नहीं रहा, तो ये C हो गया. Then comes tears. अब यहाँ पर spheres and tears, you know, these are rhyming words. So we have mentioned spheres as B. So obviously tears will be B. So this way we will have to do. Darkness के साथ किसी का नहीं हो रहा, इसीलिए C अकेला है. Pillow वो D हो जाएगा, पिलो के साथ कुछ नहीं हो रहा. बेड के साथ ओवरहेड हो रहा है, तो बेड एंड ओवरहेड E, और पैटर्न इन किसी में से मैच नहीं हो रहा, तो वो F. सो इन एग्जाम यू विल गेट 4 lines or sometimes 2 lines of the poem, and if you asked to get the rhyme scheme,
So you should always start with A. Clear? So ये जो पहला 4 लाइन है उसका राइम स्कीम क्या हो रहा है? A B C D. ठीक है? और राइम स्कीम कई तरह के होते हैं. A B हो सकता है, A B A हो सकता है, या फिर A B हो सकता है. ठीक है? So there are different types of rhyme scheme. Clear? ABC, फिर ABC ऐसा भी हो सकता है. ठीक है? So I think it is clear now. Let us know about figure of speech. This is also very important, and tomorrow we will have one separate class for figure of speech. But I think you must have confusion to figure out figure of speech. Figure of speech is also known as poetic device and literary device. So don't be confused. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए find the literary device of the line, so don't worry, that is actually figure of speech and poetic device. So each and every line contains different figure of speeches. Figure of speeches. So let us know how to identify the figure of speech. So first line, when the humid shadows hover. So the poetic device is used here, alliteration. And what does mean alliteration? When you use same alphabet for two different words like humid, hover. So H word is repeated and it is at the front of the word. So that is why it is alliteration. Next, starry spheres. So here S is repeated. Okay. So this is called alliteration. Clear? So if you find different words started with same letter, so that time you can consider it as alliteration. Clear? Next, and the melancholy darkness. Here the poetic device is transferred epithet. So transfer epithet means what? When we use a noun, here darkness is noun, and what is melancholy? It is adverb or adjective. What do you say? When something ends with ly, any word is ended with ly, what do you say it? Anyone in the class? Is it adverb or it is adjective? To whom I should ask? Anyone in the class, you can raise your hand and you can say melancholy, nicely, perfectly. So what are these? Adjective or adverb? Yes, let me ask Harit. Yes, Harit? Adjective. Sorry, adverb. Sorry, adverb. Be sure. Adverb. Confirm. Confirm. Okay. Yes, sir. Okay, let me ask Krishika. Unmute yourself. Yes, sir. It is adverb or adjective? Adverb. Okay. Krishika is saying it is adverb. Let me ask Raghav Agarwal. Raghav, unmute yourself. Yes, sir. Yes, are you there? Are you listening? Yes, sir. Okay. So melancholy, what do you think? It is adverb or adjective? So adjective. Yes, correct. Very good, Raghav. Actually, this is adjective, my dear students. Why it is adjective? What we know about adjective? It says the quality of the noun. So here the noun is darkness. क्योंकि इसमें ई डबल एस लग गया तो ऑब्वियसली ये नाउन है darkness. और वो darkness कैसा है? How it is? Melancholy. तो darkness का क्वालिटी बता रहा है.
तो जब कोई वर्ड नाउन का क्वालिटी बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है ना। सो जब आपको इस तरह से कोई वर्ड मिल जाए, मेलानकली डार्कनेस, ठीक है, और मेलानकली नाइट, ओके, सो that figure of speech is transferred epithet. Clear? Okay, next comes personification. Person, you know, when we speak person, person means living being. So personification ka jo how to understand that is personification, you can read the line, gently weeps in rainy tears. Weeps matlab rona, सिसक सिसक के, या ऐसे रोना जिसको हम लोग बच्चे लोग रोते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो सो विप्स जो है वो इट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट है, मेलानकोली डार्कनेस, वो यहाँ रो रहा है ना। सो डार्कनेस इज नॉट द लिविंग, नाइट जो है वो लिविंग बीइंग तो है, लेकिन नाइट के एक कैरेक्टर जो है वो लिविंग बीइंग के साथ कंपेयर किया गया है कि ये रो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। दैट मीन्स व्हेन यू गिव्स द क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू a non-living thing, that time it is called personification. Okay, you know, you can also understand like this. A river takes birth from hill and it dies with ocean. So यहाँ पर जो रिवर को हम लोग बोल रहे हैं कि रिवर कहाँ पैदा होता है, वो जन्म लेता है पहाड़ में और समुद्र में आके वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम इंसान के लाइफ साइकिल के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, so that is also personification. Clear? Next, what a bliss to press the pillow. So here P repeated, so alliteration. Of a cottage chamber, C repeated, alliteration. And lie listening, L is repeated, alliteration. And the last one is assonance. Assonance means what? When you find any vowel repeated for many times. Here of, soft, over, so here O is repeated but not like alliteration. Alliteration में क्या होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए, तो यहाँ पर O जो है वो टाइप बीच में भी है, so that is called assonance. Clear? So these are the important figure of speeches you need to know, and time is going to over. Tomorrow